दिस इज़ हनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ मटन मखनी कढ़ाई। इट्स वेरी डिलीशियस dish and very yummy, and we can make it at home in restaurant style with very less ingredients and full of restaurant taste. So let's start our recipe. First of all, I put one big kadhai on stove and on the stove. Now I am putting half a cup of oil in it and heat up on high flame. Now I am putting 2 medium sized onion, finely chopped onion in it, and I will fry it until its color will get light. Okay, our onion is done now. So I am putting I have 1 kg mutton lamb meat with bones. You can use boneless mutton also in it and fry it so that its smell will finish and it will fry perfectly. Our mutton is fried and it changed its color. Then I will add 1.5 spoon ginger garlic paste in it and mix it. After that I will add 1.5 spoon salt. You can add it according to your taste. Half spoon turmeric powder, 1.5 spoon cumin powder. It's roasted and crushed cumin. 1 spoon coriander powder. It is also roasted and crushed coriander. Then I will add half spoon black pepper. You can add it according to your taste. 1 spoon whole spices powder, garam masala, and 1 spoon chili paste, green chili paste, and mix it. Now I add 2 medium sized tomatoes. I add it and cook it until all tomatoes are soft. Tomatoes soft होने लगे हैं, so I am adding 2 glass of water in it. And I will cook it until our meat will tender and cook properly. So we will cook it on light flame, low to medium flame in 30 to 40 minutes. 40 मिनट्स हो गए हैं। 40 मिनट्स के बाद ये देखिए हमारा मटन जो है अच्छे से टेंडर हो गया है। तो हम इसे भून लेते हैं until के ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए। मटन मखनी कढ़ाई को अच्छे से भूनने के बाद I will add 3 to 4 spoon heavy cream, mix it properly. Then 1 spoon kasuri methi, mix it. You can make beef makhni also. Just follow this recipe and make it, and also chicken makhni. After that add some green chilies, ginger, and 2 spoon makhan.
butter and mix everything. 1 to 2 मिनट हम कुक करेंगे इसे लाइट फ्लेम में, दम पे करेंगे 2 मिनट्स कुक, और उसके बाद करेंगे सर्व। 2 मिनट्स हो गए और हमारी जो मटन मखनी कढ़ाई है वो रेडी है। तो चलें इसे स्टव करते हैं ऑफ और इसे करते हैं डिश आउट। जी फ्रेंड्स, हमारी जो मटन मखनी कढ़ाई है रेस्टोरेंट स्टाइल बिल्कुल रेडी है और मैंने इसे कर दिया है डिश आउट और सर्व करने जा रही हूँ घर के बने हुए होल व्हीट नान और सिंपल सैलड के साथ। तो इट्स अ मस्ट ट्राई रेसिपी, ज़रूर ट्राई करें। इफ़ यू विल लाइक दिस रेसिपी, गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। मेक योर कुकिंग easy and fun with me and take care of yourself.